Hi guys, we are going to start our Java ka lecture 1. Okay, Java lecture 1, right? So in this lecture, what we are aiming at? So in this lecture, we are aiming at Java syntax. Okay, and what else? We are aiming at Java comments. What we are aiming at? We are aiming at Java data types. So these three things we are going to be understanding in today's class, these three things. Cool. So first of all, I will get you some points about Java syntax. Okay, so Java syntax, what is Java syntax? So Java syntax, like how a very simple program is written in Java, right? So basically how a very simple program written in Java. So like we all say hello world program. Okay, hello world program. So how it is written in Java? So in the last video I have told you that whatever the file name you save, like your Java file, like I am saving my Java file at main.java. So this is our this is our responsibility to make something like this: public class main. Cool. So this should be something starting point of our Java program. Cool. So this is our public class, right? This name must correspond to your file name. Cool. Now inside your public class, there should be one method which is known as public static void main. And inside this, it will have arguments like strings args, something like this arguments. Okay. Now what else? Now why this main method? Like now question number one, is always the name of this method is main? Yes, always. Why so? Because this main method is the entry point for your Java program. Here the execution starts. Okay, first of all, like there is, suppose there are 1,000 lines in your program, right? And where from the execution will start? The execution will start from this main method. Okay, so any code inside the main method will be executed first. You don't need to understand the keywords before like before and after main. You just need, you for now you can ignore them. These and this, you can ignore them. You will get to know them bit by bit while reading or while watching our videos, right? For now, just remember that every Java program has a class. Cool. And which must be same as the file name. Okay, and every program contains a main method. So this is the Java syntax. So two things important. What is the one thing? Like class name and file name should be same. Second, your class must contain a main method. So these two things are very important for you to remember. Okay, right? Now we will move to our second point of introduction, that is Java comments. Okay, now what are comments? Okay, cool. So suppose you are a developer. Cool. And when you are a developer, like when you work for any company, right? So when you work for any company, like maybe your manager will say to you that so and so, please like we are developing a new project, and for that project consists of suppose 62 million of code, lines of code. Yesterday only I heard that like Facebook has 62 million line of codes. Okay, so suppose you are building something like Facebook, so 62 million line of codes, what is there? Now when a new developer joins, or suppose when a new engineer joins, and he has to like read this 62 million of lines, is it feasible, is it possible for that newcomer? No, until and unless there are some helping uh, there are helping lines for it, right? So the helping lines, you can say, the helping lines, the helping lines
Okay, these helping lines are known as comments. So not only for the newcomers, even for you, you visited your code after like 7 to 10 days later, or like 2 to 3 months later, then you yourself don't know कि why should I written this line, यार ये वाली line क्यों लिखी थी मैंने, right? So that's why we use something called as comments. Use something called as comments, that while we are writing code, we will we will write some comments also which compiler will ignore. Compiler को कोई लेना देना नहीं उससे. These comments are just for the understanding of the code. तो यार कोई न्यू ज्वाइनी आपके कोड को देख रहा है, या आप ही अपने कोड को बहुत टाइम बाद देख रहे हो, तो या विद द हेल्प ऑफ दिस कमेंट्स यू विल गेट टू रिमेंबर कि हाँ मेरा ये वाली लाइन क्या कर रही थी मेरे कोड के अंदर. सो जावा के अंदर जो कमेंट्स हैं वो दो टाइप के लिए आप डाल सकते हो, राइट? इन जावा यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स. वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड अनदर वन इज मल्टी लाइन कमेंट. सही. सो सिंगल लाइन कमेंट मतलब सब समझ रहे हो यार, एक लाइन को कमेंट करना. ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट जो ऐड कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स आप 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से ऐड कर सकते हो. एंड मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब ये काफ़ी सारी लाइन आपने कमेंट करनी है. सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस मेथड. ओके, लाइक फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश, और इनके बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो दिस विल बी इग्नोर. ये इग्नोर होने वाला है. इवन दो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, सो ये वाली चीज़ पूरी कंपाइलर इग्नोर करने वाला है. ठीक है. तो आई होप कमेंट्स वाला चीज़ क्लियर है. सही है. अब बहुत अच्छी चीज़ पे हम चलते हैं, दैट इज़ जावा स्क्रिप्ट, सॉरी जावा डाटा टाइप. जावा डाटा टाइप्स. जावा डाटा टाइप समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, जावा वेरिएबल्स. यही आपकी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट है गाइस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यही लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट है. तो जावा वेरिएबल्स हम पहले देख लेते हैं. तो इन जावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ जल्दी जल्दी. स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकता है, ठीक है, फ्लोट हो सकता है, और कैरेक्टर हो सकता है, एंड एक तो पता ही है आपको कांस्टेंट है, बूलियन. ये तो हर लैंग्वेज में होता है. ठीक है. सो सबको पता है यार स्ट्रिंग क्या स्टोर कर सकती है. हाँ, सबको पता है स्ट्रिंग क्या स्टोर करेगी. सो स्ट्रिंग एक्चुअली स्टोर्स सम वैल्यूज सराउंडेड बाय डबल कोट्स. ओके, सो कुछ भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखी है, दैट शुड रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, राइट? इंट क्या स्टोर करने वाला है? इंट स्टोर करने वाला है एक नंबर, राइट? लाइक होल नंबर्स ये स्टोर करने वाला है. ओके, विदाउट एनी डेसिमल एंड सच. लाइक अगर एग्जांपल दूँ तो 123 या फिर -123, सपोज ऐसा करके. फ्लोट क्या स्टोर कर सकता है अपने अंदर? फ्लोट स्टोर कर सकता है डेसिमल पॉइंट्स, राइट? अगर फ्लोट का एग्जांपल लिखवाओगे तो 19.99 या फिर -9.23 ऐसा करके. ठीक है. कैर क्या स्टोर कर सकता है? कैर स्टोर कर सकता है कोई भी एक सिंगल करेक्टर. आपके कीबोर्ड पर जो भी एक सिंगल करेक्टर है वो स्टोर कर सकता है. ये कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ABC सपोज. ये नंबर भी हो सकता है सपोज, लेकिन ये कैर में रहेगा, राइट? वो नंबर नहीं होगा. सो ये अगर सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे लिखा है तो दिस इज़ अ कैर. उसकी वैल्यू 1 है बट दैट इज़ अ कैर. ओके, ये स्पेशल करेक्टर्स भी स्टोर कर सकता है, जैसे कि एट द रेट और हैश, और बूलियन तो यार सबको पता ही रहता है. बूलियन क्या स्टोर कर सकता है? केवल दो ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स. ठीक है. तो जावा के पास ये 5 वेरिएबल्स, 5 डाटा टाइप्स कह सकते हो तुम, है ना? ठीक. 5 डाटा वैल्यूज़ हैं या फिर डाटा टाइप्स हैं, तो ये वो स्टोर करता है. अब लोगों को दिक्कत आ रही होगी यार हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे. सपोज मैं एक प्रोग्राम आपसे बनवाने के लिए कहता हूँ कि यार राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स. ठीक है भाई, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो 2 नंबर को ऐड करे. तो यार पहली बात तो 2 नंबर होने चाहिए. जैसे मैथ्स में हम बनाते थे ना कि भाई x इज इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू 6 है. 2 नंबर हैं मेरे पास, एक x है एक y है, दोनों को ऐड करना है तो x प्लस वाई. ये x क्या होता था? दिस इज x इज वेरिएबल. y क्या है? y इज अ वेरिएबल, राइट? इन द सेम वे हाउ वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स इन आर जावा लैंग्वेज. सो बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमें उस वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना है. ठीक है. फिर उस वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है. ठीक है. फिर एक इक्वल टू लगाना है एंड देन उस वेरिएबल की वैल्यू. ऑलमोस्ट कुछ मैथ जैसा ही है. ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ मैथ जैसा ही है. अब देखो
जैसे कि सपोज कर लो मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, तो भाई 2 नंबर ऐड करने के लिए पहले 2 नंबर होने भी तो चाहिए। टाइप क्या है नंबर का? इंट। सपोज मैं ए बोल रहा हूँ इक्वल टू वैल्यू क्या, सपोज 5 एंड अ सेमीकोलन एट द एंड। ओके, तो जावा में कोई भी लाइन जब टर्मिनेट होती है तो उसके एंड में सेमीकोलन लगता ही लगता है। इंट बी 6 सेमीकोलन, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, ए प्लस बी। तो ये छोटा सा 3 लाइन का प्रोग्राम। अब इसका आउटपुट क्या होने वाला है? इसका आउटपुट होने वाला है 11। सही। सो ये क्या चीज़ करी है मैंने, ये वाली चीज़, ये मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। ऐसे आप इंट की जगह स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक कैपिटल एस आता है भाई स्ट्रिंग में, सब लोग ध्यान रखेंगे, स्ट्रिंग इज अ कैपिटल एस। ओके, हाँ। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सपोज माइक्रोसॉफ्ट। कूल। सो अब नेम क्या है यहाँ पर? नेम का टाइप क्या है? नेम इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। कूल। हाँ, एक चीज़ और, हम लाइक वेरिएबल्स आर डायनेमिक, हम इनको चेंज, इनका टाइप तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं जावा के अंदर। सपोज ऐसा लिखा है मैंने, इंट ए इज इक्वल्स टू 6, तो मैं कल को सोच, मेरे को आया नहीं भाई ए की वैल्यू तो 7 थी, तो आई कैन डू दिस। तो वेरिएबल्स आर अब लाइक दे आर डायनेमिक, उनकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज नहीं कर सकते। लाइक दिस इज अ एरर, इंट ए इज इक्वल्स टू 6 एंड फिर मेरे को मन किया कि नहीं यार, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू एप्पल, ऐसा कर दूँ। सो दिस इज अ एरर। Why it is error? Because you already defined a as a int. Now you are changing its type. That is not possible in Java language, right? Now, first of all, now there is uh, there is one another word which I want to highlight. That is, एक कुछ होता है जावा के अंदर, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीवर्ड्स। तो ध्यान से देखना यार, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ध्यान से देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स, ठीक है। अब जावा क्या करती है? सो जावा हैज़ लाइक, व्हाट इज़ जावा? लाइक जावा इज़ अ लैंग्वेज, जावा के पास अपनी अपनी लाइब्रेरीज हैं, उस अपनी अपनी लाइब्रेरीज में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई। सो व्हाट आर कीवर्ड्स? सो दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स which contains special meaning, okay, special meaning। सो ये वर्ड्स जावा लाइब्रेरी की तरफ से रिजर्व्ड हैं एंड ये कुछ स्पेशल मीनिंग ही कंटेन करते हैं। जैसे कि पहला कीवर्ड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इंट। इंट इज़ अ कीवर्ड, राइट। कैपिटल एस के साथ स्ट्रिंग, दिस इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। CHAR, कैर, दिस इज़ अ कीवर्ड। लाइक बूलियन का बूल, लाइक बूलियन, दिस इज़ अ कीवर्ड, ओके। अब एक कीवर्ड और देख लो, फाइनल, दिस इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड। अब ये फाइनल क्या है? व्हाट इज दिस फाइनल? ओके। सो अगर मैं कहीं ऐसा कर देता हूँ, ध्यान से देखना यार, है ना, फाइनल int b is equals to 6 and b is equals to 7. If I write something like this now, then it is going to throw me an error. This is an error. Why this is an error? This is an error because I have defined b. Okay, so b. I have defined b as a final. Final means a constant value, right? Constant means that cannot be changed. Okay, but I am changing the value of b in the next line, so that is going to give me an error। okay, so what final means? Final means एकदम आपकी constant value, okay, that cannot be changed, that cannot be changed। cool, okay। I think like data types are enough, okay। Now one more thing I want to like highlight in front of you, uh, there is something called as identifiers, okay, something called as identifiers। चलो देखते हैं व्हाट आर जावा आइडेंटिफायर्स। सो यहाँ पर एक जल्दी से लाइन बना देते हैं एंड अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, जावा आइडेंटिफायर्स। ये क्या होता है? व्हाट आर जावा आइडेंटिफायर्स है? चलो, सो ऑल जावा वेरिएबल्स, अभी हमने ऊपर वेरिएबल्स पढ़े थे, राइट। सो ऑल जावा वेरिएबल्स
all Java variables must be identified with unique names. Okay, unique names. Okay, so आप एक तरीके से बोल सकते हो कि variables are also identifiers only, right? So these unique names. So these unique names are called identifiers. Okay, so suppose int num1 is equals to 6. So this num1, okay, this num1 is a identifier, right? It's a variable also, but it's an identifier also, right? Cool. So this num1 is an identifier. Sorry. So this num1 is an identifier. Okay. चलता है. Cool. Uh, and like मैं ऐसे नहीं कर सकता यार. This what I can't do. Just a minute. Okay. Cool. So मैं कुछ ऐसे नहीं कर सकता जैसे कि int num1 is equals to 7. So this is what I can't do यार. क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसे? Because मैंने अभी बताया कि एक ही बार नामकरण हो सकता है. Like it's a unique property of a variable, right? Cool. Now अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर की क्या रहने वाली है, वो ये रहने वाली है कि नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम रूल्स फॉर नेमिंग. इनको यार सब लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेंगे एंड बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने पास याद भी रखेंगे, ठीक है? और रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल. ओके, ये ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के लिए सेम ही रहते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे. सो पहला क्या है? नेम कैन कंटेन, जो मैं लिख रहा हूँ केवल वही, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल. लाइक ये वाला जो सिंबल होता है डॉलर. सो आप कोई भी वेरिएबल का नाम बना रहे हो, ठीक है, कोई भी आइडेंटिफायर का नाम बना रहे हो, तो या तो उसमें भाई लेटर्स हों, या तो डिजिट्स हों, या अंडरस्कोर हो, या डॉलर साइन, या ये चारों एक साथ हो, डजंट मैटर. लेकिन इन चारों के अलावा कोई पांच चौथी चीज़ ना हो तो ही आपका वो नेम जो है वैलिड है, ठीक है? सेकेंड थिंग क्या इंपॉर्टेंट है? नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर. यहाँ देख लो यार, ये थोड़ा सा सबको इरिटेटिंग सा लगता है. नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, राइट? नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर का क्या मतलब है? कुछ ऐसा मतलब है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, नेम num1 इज इक्वल्स टू 5 ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता. ओके, सो दिस थिंग इज गोइंग टू थ्रो मी एन एरर. वाई इट इज गोइंग टू थ्रो मी एन एरर? बिकॉज ये इस वाले रूल को वैलिड फॉलो नहीं कर रहा कि नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर. यार नंबर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकती हैं, राइट, बट दे मस्ट कम आफ्टर, लाइक आफ्टर अ लेटर. ओके, तो दिस इज वैलिड, even this is valid. Int underscore 1 is equals to 2, this is valid. Okay, so okay, so I'm not sure about it, but yeah, this must be valid. Okay, now the rule number third. What is the rule number third for you? So rule number third, name should start with a lowercase letter and it cannot contain a white space. So uh, start with lowercase. This is like not a rule, like it's a good programming practice only. Start with lowercase. Okay, so this is just a good programming practice, nothing else. Okay, but and this is a rule, and no white space. This is the rule. Okay, so name can start with a lower letter, so this is just convention. Okay, good programming practice, but this is must. White space नहीं होनी चाहिए यार, ठीक है?
Now the third rule. So name can also begin with $sign and like मैंने बताया name can also begin with dollar and underscore. Cool. So names are case sensitive. केस सेंसिटिव का क्या मतलब है बता देते हैं. तो केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो int a is equals to 6 and int a is equals to 7, so these are two different variables. Okay, cool. Now the last rule क्या है? रिजर्व्ड कीवर्ड्स, राइट? ये इंपॉर्टेंट. रिजर्व्ड कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं करो. अपने वेरिएबल को नाम देने के लिए आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करो. जैसे कि कल को आप ये नहीं लिख सकते हो कि int final is equals to 6. दिस इज नॉट वैलिड. वाई इट्स नॉट वैलिड? बिकॉज ये जो फाइनल है ये ऑलरेडी एक रिजर्व कीवर्ड है. इसमें जावा के अंदर इसका कुछ और ही यूज़ केस है, राइट? So like this, these can reserved keywords cannot be used. So I request you just learn these like 5 or 6 rules that like not only for Java but in future whatever language you want to learn, so in that language these are also going to help you here. ठीक है, cool. So ये था आज की क्लास के लिए. आई होप यू एंजॉय दिस क्लास. ओके, नाउ व्हाट फॉर द नेक्स्ट क्लास. So in the next class, I like want to deep down into a topic called Java data types. Cool, Java data types. Okay, in Java data types like हम देख रहे होंगे कि उसकी रेंज क्या होती है, साइज क्या होता है. ठीक है, लाइक हमने पढ़ लिया इंट भाई एक इंट है, वो एक डाटा टाइप है, लेकिन इस इंट का रेंज क्या है, इस इंट का साइज़ क्या है. लाइक दिस थिंग्स वी आर लर्निंग इन लाइक in the next class. And one more thing what we are going to learn in the next class is Java type casting. अब type casting क्या होती है? Type casting is like converting one type of data into another type of data. That is what called type casting. So I hope you enjoyed this video. Okay, if you enjoyed, please like, comment and share. Okay, thank you.